In continuation with the sample preparation techniques in bioanalytical chemistry, we will study that how sample preparation in biological fluids, what are the problems and how much of the total analysis time it takes, and why it is important for the final drug analysis, for final tumor marker analysis, or final biological analysis in maximum. So sample preparation techniques in bioanalysis are always they are multi-step techniques. They are mostly time consuming and labor intensive procedures. You need because it is multi-step and it is having it consumes more time, and therefore it takes involvement of plenty of people at each step. Therefore, it is also said that about 60 to 80% of the analysis time is taken by sample preparation methods only. And these techniques are so there is a strong contrast to modern fast LC methods and detection approaches, and these techniques make sample preparation steps quite quick or fast analysis. Therefore, we take use of modern methods for detection of bioanalytes. Therefore, it is also called that sample preparation is often the limiting step of fast bioanalysis and the most error-prone part of the analytical methods. Most error-prone part means maximum chances of making any mistake, of adding any of the improper buffer, improper solvent, improper pH, or introducing any of the contamination during the preparation, that which can really damage the nature of your analyte. And if you are looking for any of the drug, let's say amoxicillin, and if you add any of the reacting species in it during the sample preparation process, and the whole formula of amoxicillin, it changes, and it changes to, let's suppose, what should we say, any of the derivative of amoxicillin, then how can you detect the amoxicillin in LCMS? So this is sample preparation is most error prone part of the analytical method. There is currently a focus on improving the sample preparation processes by what are the preparation processes जिनसे हम sample preparation improve कर सकते हैं या time short कर सकते हैं. Shortening sample preparation time, cutting the cost of analysis, making it more or less labor intensive, decreasing the sample volume and solvent consumption, reducing the number of sample preparation steps, and adopting a whole process for automation. So these are the few steps through which we can improve or fast track the sample preparation in bioanalytical chemistry. As I was just giving you the example of amoxicillin, that was actually the base for this slide, in which we will talk about the need for bioanalysis in the pharmaceutical industry. Pharmaceutical industry, it deals with the drugs or medicines. In normal traditional language, we say it drugs, medicines, and for the detection of drugs, either in humans or for initial pharmacokinetic studies, the drug concentration inside the body needs to be determined. So it is important, bioanalysis of drugs, it is important aspect of drug development process.
जब कोई ड्रग इंट्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है, तो किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट और इसको ह्यूमन बॉडी में आपको फाइनली ट्रायल करना होता है, तो आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कितनी कंसंट्रेशन इफेक्टिव है। आपने अक्सर मेडिसिन के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, देखा होगा कि समटाइम्स लिखा होता है 5 मिलीग्राम पर 100 ml कि इस कंसन, और फिर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि 1 टेबल स्पून आपने ये मेडिसिन पीनी है, या फिर हाफ टेबल स्पून या फिर 1/4 टेबल स्पून। तो इट डिपेंड्स कि आपके अंदर डिजीज़ की क्या रेशो है और आपको कितनी कंसंट्रेशन उसके अगेंस्ट लेंगे तो वो डिजीज़ क्योर होगी। तो इसी के ही चेक करने के लिए आपके बॉडी के अंदर किसी एक ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है उसको डिटरमिन करना ये ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस का हिस्सा है, और उसके बाद ही किसी ड्रग को मार्केट किया जा सकता है। So, bioanalytical methods are needed to obtain information on drug profiles from animal toxicokinetic studies and from clinical trials, including bioequivalence studies. These results are used to make critical decisions supporting the safety and efficacy of a drug substance or drug product. Similarly, it is said that biological fluids are not convenient for direct analysis using instrumental methods because of the high sample complexity and high content of many interfering compounds. ये चीज़ें हम पिछली स्लाइड में भी डिटेल में देख चुके हैं कि क्यों बायोलॉजिकल सैंपल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं और इंटरफेयरिंग कंपाउंड्स क्यों इनमें ज़्यादा होते हैं, because of the nature of the biological stuff. Because if you are going to detect, अगर आपको कहीं प्रोटीन या किसी अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करना है बॉडी के अंदर, तो आपको पता है कि बॉडी के अंदर मल्टीपल कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, मल्टीपल टाइप की प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स भी हैं। इसके अलावा वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आफ्टर द कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस दे आर आल्सो देयर। तो आपको उन सब से या तो प्योरीफाई करना है अपने सैंपल को, या तो उनकी तरफ अपने मेथड को इनसेंसिटिव बनाना है। ठीक है, तो जनरली वेरी कॉम्प्लेक्स लिक्विड सैंपल्स इंक्लूडिंग होल ब्लड, प्लाज्मा, सीरम, यूराइन और saliva are handled in bioanalysis. The target analytes are often present at very low concentration while the interfering compounds are abundant. Let's suppose आपकी बॉडी में in any of the persons or a patient there is a little concentration of, let's say, any of the tumor marker or any of the irrelevant protein that is not required by the body, and it is causing tumor in any of the patient. So the concentration of that protein which is causing cancer or any tumor, that the concentration is very low actually as compared to abundant proteins which are necessary for other activities. So the interfering compounds are actually the abundant proteins which are healthy proteins, I will say, and the interfering the analyte actually, which is the tumor protein, its concentration is very low. तो जो बहुत कम मिकदार में है प्रोटीन उसको हमने डिटेक्ट करना है, और जो ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी प्रोटीन्स हैं, और उनसे हमने अपने सिस्टम को प्योरीफाई करना है ताकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो डर्टी प्रोटीन लेट्स से वो रह जाए ताकि हम उसको प्योरली एनालाइज कर सकें। तो इस सब के लिए सैंपल प्रिपरेशन और हैंडलिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि जी सॉल्ट्स एंड फॉस्फोलिपिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैट्रिक इफेक्ट्स एंड LC-MS एनालिसिस, एंड प्रोटीन्स आर डैमेजिंग फॉर एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट बिकॉज दे कैन इरिवर्सिबली एब्जॉर्ब ऑन द स्टेशनरी फेजेस। आपको याद होगा हमने इनिशियल स्लाइड्स देखी थी, वहाँ पे GC इनलेट के ऊपर भी प्रोटीन्स कैसे क्लॉग कर गई थी, तो resulting in substantial loss of column efficiency and increase in back pressure or system clogging. To prevent these issues, adequate sample preparation is mandatory for bioanalysis techniques.